Okay, welcome you all with Get Me Trained Institution. This is Shivraj, and I'm hosting session on accounting, key concepts, journal entries, then the trial balance, trading account, profit and loss account, and balance it. And in next session, that maybe I'll be covering the accounting concepts. Okay, so that all you know that because since last couple of months I have uploaded almost more than 42 sessions on investment banking, capital market, hedge fund, mutual fund, private equity. Okay, and maybe you would have seen those videos, but now I'm gonna host videos or sessions on accounting part. Why the accounting part is important? Because you would have experienced it wherever you worked. Accounting is playing very crucial and important role in the operation part, because without accounting you cannot perform the operational activities in a hedge fund or maybe in a mutual fund, maybe private equity or any fund activity or any banking business. Or this applies to all the businesses, that I would say, because from investing to managing the funds, or maybe to calculate the returns on investment, or to apply the tax treatment on your net income. So for all that purposes you need to have a good understanding about the accounting concepts. And I'm gonna host this session in two languages. One is Hindi and second is English, because there are most of the viewers are from the from the Hindi medium as well, so they are not able to understand. That is what I have decided. So 20 to 25% I'll speak in Hindi and the rest I'll speak in English. Okay. So the most important is why I'm hosting this session, and what is the importance of journal entries from an interview perspective as well. Because I have met lots of people, even I have interviewed with many organizations or hedge fund house, right, or investment banks or capital markets, right. The the journal entries plays vital role in the interview process as well, because most of the interviewers they feel that the journal or adjustable journal entries are very critical to explain or understand. That is what you can expect more and more questions on those. And what are those then? Prepaid interest, right, accrued interest or accrued income, I would say accrued income or prepaid expenses, right. Then your outstanding expenses, right. Then the income received in advance. Sometime happen, right, your vendor can pay the payment to you in advance for a next accounting period. Then accrued or recurring expenditures as well. So that we see in terms of insurance, and we see even in terms of promotion and advertising expenditures. These are very important. You can expect questions on those, and that can be important from an interview perspective as well. And this is applies for all the roles. Suppose you are a fresher, then maybe senior analyst, maybe a VP, AVP. If you're looking for any roles, there's the journal entries will be key activity, or the key subject for all the roles, because few questions you can expect on those. If you're like fresher, you can expect questions on golden rules of accounting. You can expect questions on like rent paid, purchase, sale, right. You can expect questions on those. If you are a senior analyst, so your the difficulty level will be little bit increased. You can expect questions on adjustable entries, where will have a 2 to 3 effects in your financial statements. Then suppose you're looking for a managerial role or maybe VP or director, then you can expect again
the questions on the accounting entries as well as their impact or effect, and the other aspect like if you miss to record those particular entries in your books of account, then what's going to happen with the financial statements. So you can see such things in the interview procedure. So and because and what I have seen, because most of the people that you have questions in your mind, what is the difference between the hedge fund accounting or maybe mutual fund and the the investment accounting than with the normal accounting? I would say there is no difference. There is no difference. Why and how? I'll answer to this because see, normal accounting that we do on a tally platform, or else we have the SAP applications that we do accounting for manufacturing businesses, retail businesses, maybe FMCGs and all. And the same way for investment accounting businesses that we have a different accounting platforms, because every hedge fund house or maybe mutual fund house or maybe the investment advisories and other administrators and all, they have their own applications. But the way of accounting, the purpose of accounting, right? Because in a normal business, why we do the accountings, right? To calculate or to mobilize your resources in an effective and simple way. If you can ask me why we do this accounting for any businesses, if you want to mobilize your resources in an effective way, then we need to perform the accounting checks in a business. Otherwise, you cannot utilize your capital. Otherwise, you cannot even calculate your revenues, your profits, your losses, and the again the taxes as well. That is what from all, and this all the key elements which is are very important for all the business segments, including your investment business as well, because the most of the people they are not aware about it, how the accounting would be in the hedge fund or mutual fund businesses, maybe in a private equity businesses. So trust me guys, the all the the remain the accounting terms, knowledge, concepts, everything would remain same. The little bit difference would be the accounting platforms, because they use their own accounting platforms or maybe different ones. And the other thing is that so the language that there you can see the different, right? But the other rest, the accounting portions, the journal entries and everything would be remain same. There won't be change anything. So if you have a doubts in your mind that so what would be different, then I hope my this statement will help you to resolve or get the the confirmation on it. But yes, the little bit the language would be different in the investment accounting. Okay, and most of the people why they are not able to understand, because we use different accounting platforms there. Let's say hedge fund, right? So there is one accounting platform which is the Geneva. Even you can mine this information on internet as well, right? Then there is again the Aladdin. This is again one of the platform the most of the hedge funds are using to manage or maintain their all the transactions, correct? And there are many more, right? I cannot take all the names in this recorded session, but there are many more accounting investment accounting platforms are available, and most of the hedge funds are using the same, and even mutual funds are also using the same. And that is what the journal entries plays a key role into the all the businesses. Because even why I'm taking this session and why I want to discuss about the journal entries had even I was having interview with one of the hedge fund administrator, and uh, I had seen that the most of the questions were on the journal entries, postpaid journal entries, accrued income, outstanding income, right? Then the effects and the other areas, like if you miss anything, then what impact would be there on the maybe profit and loss account, maybe on the balance sheet, maybe on the other aspects. And then that is what I thought I should host session on this, because you are aware about the other general terms of the hedge funds, mutual funds, and the other the products, but you are not aware about the accountings and their key role into the that particular business. So that is what I would say. This would be refresher sessions for all of you. Your hands, if you have a good hands on accounting entries, that is fine. If you don't have, then watch this.
Then we'll start. Okay. Okay, why we want to study this? Because we just want to understand the meaning and significance of a double entry system. That is what we want to go through with this particular session. Then the importance of this session is like familiarize with the terms account and understand the classification of accounts into personal, real, and nominal. This is also important because we do deal with, if you are from the investment accounting, then you can see the nominal account because the fees that we charge to our investors, that is a part of nominal account. Sorry, fees. Then the who pays that fees, investor fees, means that is again those are the personal, their accounts should be like personal accounts. Then the real accounts, investment or the cash that we do deal with, cash portion, so that is a part of your real account, right? So it means you can directly link those terms with the classifications of accounts, or the the golden rules of accounts. Okay. Then the another one is the utility of such a classification and the sub classification. This is also important because most of the people, they are not able to understand the utilization and the classifications of the accounts, golden rules of accounts in an investment business, because most of the people, they are not even from the commerce background, they are from engineering, mechanical, and then later on they join this industry, and now they are into this. Because they don't have a base, then it will be difficult to understand the accounting as well. And even uh, if you see, even the people are from even the the commerce, still they are not able to understand because there is a gap between their the academics. And now suppose you have a 5 or more than 5 years of experience into this industry, and you have worked with the process like recon or the trade settlement, still you will have a gap in the the accounting knowledge. You won't be able to understand the journal entries and the other key aspect. And this is happening with more than 70% of people who are into this industry. And if you have a same problem, it means you are in that 70%. 30% are very smart, they always keep enhance, or they keep updated on the accounting knowledge, and that is what they are like pro into all the stuff, and even they are getting promoted and they are into this industry as a director, then VP, AVP, and the senior members as well. It depends. But anyways, I don't want to be highlight all the such areas that. Okay. And then they understand how the debits and credits are determined from the transaction event. Okay. So I'll help you to understand the debits, because see, if, and again one more thing, suppose you are not from the commerce background, you are not from the accounting or any other terms, then that's fine, right? Because there are rules that just we need to keep in mind while preparing the accounting records or accounting statements. And these rules are similar for the commerce and even non-commerce students as well, or professionals as well. So there is no difference, because if you say like I'm from MBA, then even these rules, it means I'll have to by heart, or they rant those rules, right? And even the same will have to do the same for the non-commerce students as well. So there is no difference. And even from a criticality or understanding level, this is applied to both, because this is equally critical for both, this is equally difficult to understand for both the students, both the categories of students. And if you have that what I would say, नहीं गलत फैमिली अगर माइंड में है कि या आई एम नॉट फ्रॉम अकाउंटिंग सो आई वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड ऑल, देन यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड. बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड होता नहीं, मतलब ये माइंड में रखना ही नहीं है कि मैं अकाउंटिंग फील्ड, आई एम नॉट फ्रॉम अकाउंटिंग सो आई वुडंट बी एबल टू. बिकॉज अगर आप नहीं हो तो भी आप सीख सकते हो. इट्स अ रूल. रूल इट मीन्स इट्स लाइक लॉ. When we talk about law, so law will be for everyone, right? So the same, and even if you start to do study, then it will take same time to others as well to understand. But that's fine. Okay, so those are the key that points we wanted to cover in this session. Let's see how we can cover it. Okay.
Okay, so sources of documents, that is what source that we refer to prepare a books. Okay, in a accounting, what we do, because see, throughout the year, throughout the the duration, what we do, we record our transaction, and even we carry the the information or sources as well, right? So what is the source? Suppose if you purchase any computer or any device or any that is required to your business, right? Then you need to carry the receipt of that particular phone as well, because without that you cannot prepare accounting entries. And if you prepared, but still you need to have evidence that you have purchased something and from whom, because eventually this, well, the person, let's say X person, he sold something to you and you purchase something, and you are a B here, let's say, because such a transaction should be recorded in the books of A, because he sold something, and the same transaction should be recorded in the books of B as well, because he purchased something. So it means, and if you want to prepare the entries for this, then you need to have a source, right? All the documents in books which contains financial records and act as evidence of transactions. So you need to have a documents in place to prepare a financial reports, or in terms of you know preparing of transactions or recording of transactions and all. And at the end of the year, suppose you're looking for your own, the what I would say, the ITR that we file at the end of the quarter or maybe at the end of the year. So at the time, we would have seen such, receipts and all. So most probably CA asked to provide the reference or the resource that he can confirm, and then he can upload it. Yes, so this is valid. If you don't have a resource, then it's be difficult to to provide approval to it. So that is what all the resources, all the documents, that is very important while preparing the financial records. That that you need to have, as simple as that. Then the once, because this is a part of, like, so we prepare records and then we post or transfer all the balances to the different accounts: purchase day book, cash book, sales day book, purchase return book, accounts where information relating to a particular assets, liability, capital, expenses, and all the things that we record to the respective accounts. And the and once you prepared all the books, all the accounts, then you can transfer all the balances to the trial balance here. Why trial balance? Because trial balance will help you to prepare your the trading account. Trial balance will help you to prepare the profit and loss account, right, or statement, and then you balance it. So that is what, because every information is depends on each other. Most of the time you would have seen the questions in your interview. If you record any trades or transactions or maybe any entry incorrectly in the books of your account, suppose let's say this happened in terms of the cells, you recorded sales entry incorrectly in your books of account, or maybe in the sales book, right? So sales is the credit balance, right? Because we record this credit balance as on the trading account side, on the credit side of trading account, correct? Let's say purchase, which is your 100, and now you sells. The actual sales value is around 200, but you took only 100, right? And you prepared the trading account, let's say, and you're here that you can see the other expenditures as well that you have, right? And now see this, when you prepared it, so your debit side is around 140 and your credit side is around 100 only. And in this case your debit side is greater than the credit side. It means you have a
gross loss in your trading account, which is around 40. So you can transfer that loss to the profit and loss account, okay, to the debit side of profit and loss account. And once the debit side increase, it means again, so if the debit side is higher than the credit side, so eventually it will lead to the net loss. And if it is there net loss in your profit P&L, profit and loss account or statement, then definitely we pull the balances, this the net profit balance from the profit and loss account, and that will lead to the, or you can post this balance to the debit side of a balance it. So it means it will affect on your balance it as well by the same amount. But eventually your trade was in profit, because if you see the actual, the the current value of your sale is around 200, right? And if you mention here 200, it means you would be at 2, so 200 into 40, and let here in this case, suppose you have a 200 your credit balance, then the entire picture would be different. So now in this case you will have a gross profit. Then if you can transfer this profit to the credit sides of a profit and loss account, then your credit sides will be greater, and then you will have a actual net profit in your hand. Correct. So this is the importance of the trading recording a transactions correctly, or accurately. If you miss any information, because you can see the process which is trade processing, or the recording of transaction process in the hedge fund or mutual fund, or maybe in a private equity business, or maybe in a retail segment as well. Then you can see when we incorrectly record any transactions into our books of account, then the client escalate to us, so it will impact on the the entire accounting cycle. So you can you please correct that, right? So you can then you do the investigation, and then reconcile with the other teams or the middle ops, or maybe other uh, front office guys to rectify it, and then you can correct, and then you can make the necessary amendments, and you can take action accordingly. Why? Because there is a importance. Without importance, there is no process in place. So keep this thing in mind, so that if you record any incorrect entry in the books of your normal, if you record any entry incorrectly in that particular books, it will have a big impact on the all the other accounts. And if you say like how can we correct it, then we'll have to reverse that the entry. First of all, reverse it means we'll have to, whenever you make any incorrect entry, or whenever you uh, yeah, so once you reverse it, so like debit or credit balance will be, so when you see the netting, it will be zero, and then there won't be any impact on that particular, and then you can record the new one which is that you're looking for with the correct figure, right? This is how we do it. Okay, eventually, so see the point is, so there is importance of all the activities what we do in our investment business as well, and the same importance you can see in the other businesses as well. That is what the accounting plays very vital role in all the business segments. Okay. So again, if you are a fresher, from a fresher point of view, so this information is required, right? So what are the accounts? Personal and impersonal. Under personal, natural, personal, and artificial, and the under impersonal accounts, real and nominal, right? So that just we need to know which is the personal, then real and nominal. And if someone asks if uh, the another the types, the main types, then you can say like impersonal and impersonal. Personal, which is the real and nominal, and personal, natural and artificial. But for us, so that's three are important: personal, then the real and nominal. Okay. Okay. So we'll see little bit about the double entry system, right? So I don't want to go into details that what is the double entry and all. So you can read that information anywhere. Like, but yes, the double entry system of accounting is more than okay. It's a old method that we have, but
So we'll go through the benefits of a double entry or advantage of a double entry system. When we use this system, the accuracy of accounting work can be established through the device of the trial balance, right? Because trial balance will help us to trace all the balances from a different account, so you can easily trace to all the accounts. And even in the hedge fund or maybe mutual fund, maybe even in investment business, you would have seen that we do the recon, right? Recon, it means we do again the trial balance versus subledgers, or maybe versus subledger versus main ledgers. Why? Because if there is no discrepancy between subledgers and main ledgers, it means your trial balance would be accurate. As simple as that. And if your trial balance is accurate, then your trading account, profit and loss account, and balance it would be again accurate. So there is a link between each other. And most of the time, when you join any recon process, you can see such things or task in their process. There are challenges, definitely you can see most of the time that above we will discuss about it. If the trade, particular trade has been booked incorrectly in the respective books, maybe sales or purchase, or maybe incorrect any expenditure that you have booked or extra fees that you have charged to or received from the client for a next accounting quarter, then definitely there would be impact. See, if you have received extra, that is fine, right? But what we do here as a, when we apply accounting treatments to the particular transactions, as per the rules of accounting, we do only consider the expenditures and incomes or maybe assets and liabilities only for that particular accounting cycle. If we spend any amount for a next accounting cycle, definitely that the cash has been gone out from your pocket or bank's account, you can definitely record that. But that is for a next accounting cycle as well. So it means that you cannot consider that entire cash or the expenditures whatever that you have made for the next accounting period. So you cannot consider that while preparing the accounting statements for this particular accounting cycle. So we need to understand this importance first. That is what we do the accounting. Otherwise, see, even if we are not considering that, so there is, it means there is no legitimacy in that particular profit or the revenues whatever we have earned. And that is what I think, the all the when you study all the accounting concepts, will have a deep understanding about it. What is the importance of like accrual concept, cost concept, disclosure concept, matching concept. There are a number of concepts. What is the importance of those? Then you can understand it easily, right? So the accounting work is important. Then the profit earned or loss suffered during a period can be ascertained. It means can be confirmed easily. And this is important, guys, because too big every business is looking, or even including investment business is looking for a maximum return on their investment, or how they can utilize their service, or how they can utilize their resources to maximize their return. All businesses have a same goal, that is to earn maximum returns and to achieve maximum growth in terms of BPS and to deliver phenomenal returns to their stakeholders, including shareholders, their employees, the board of directors, maybe government in terms of taxes and all, maybe society in terms of service, on time service, or maybe quality products and all, maybe quality service and all, right? Because they all have a same intention. But yes, the profit is common for all. Without that even nowadays the social firms as well, like non-profit organizations also, they are earning a lot. Okay, so there is, without profit there is no motive. They say that they have a different motives and all, but eventually this all the motives is backed by the profit only. And if you want to calculate profit, so you need to have all the accurate, that you have maintained accuracy in the accounting work. Simple. So it means everything that linked with each other, right? Then the third point, you can see this, the financial positions of the firm
or the institution consent can be ascertained at the end of the each period through the preparation of the balance sheet. Balance sheet, it's like a mirror. So where you can see the liabilities, you can see the assets, and where you can see again your the own equity or owner's equity. And why this is important, this will help you to maintain a balance between assets and liabilities. You can easily trace them. If the liability is increased, then eventually that business can lead to the bankruptcy as well. And even the assets increased, it means that is lead to like your most of the resources are like stagnant and idle. So in that case also there is a possibility which will impact on your profit or profitability or earning per shares. So it means eventually you can see the links between each other. Suppose you have parked lots of cash in your just the capital reserves, or maybe in a cash reserves account, maybe in your general reserves account, that the cash is idle. When we say like cash is idle, it means there is that you cannot earn any return on it, right? So all the visibility you get once you monitor or once you examine the your balance sheet of your business. And from an investing standpoint, if there is no accuracy in the balance sheet, then how you gonna take the investment decisions? From my viewers or the subscribers, most of the people that you are aware about the investing, or maybe you will all have a demats accounts and all. So you, before investing, definitely you see the the fundamentals of that particular business, and the balance it is one of the key statement that you can see before investing into it, right? So name itself, you can see the balances, all the balances from a different accounts that you can see on a sheet which is combinedly called balance sheet. Okay, so from investing to monitoring to take investment decisions, and even if you want to bring the investment or convince to the investors to do investment into your business, for that matter also you need to have your balances in your hand, right? So financial statements, it's like evidence that guys you're earning something. Otherwise you cannot convince or negotiate with the client that you are earning something and that so you can do invest into a business. This is a bit difficult. So it means it's like a mirror of your business, and your financial statements will represent your growth or maybe degrowth, right, or whatever status that you have to the investors or to the stakeholders, combinedly called will call like stakeholders, right? ओके जो हिंदी मीडियम से है, जो ये टर्म्स जितने भी है, अकाउंटिंग का महत्व इतना ही है बिजनेस में, जैसे कि अगर अकाउंटिंग नहीं है तो हम इन्वेस्टमेंट के कुछ भी डिसीजंस ले नहीं पाएंगे, या फिर इन्वेस्टमेंट ला नहीं पाएंगे, इन्वेस्टमेंट कर नहीं पाएंगे किसी में। एंड जो अगर बैंकिंग जॉब्स के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो वहां पे कई सारे एक्टिविटीज होते हैं, जैसे कि एक फीस एलोकेशन एक्टिविटी है, मैनेजमेंट फीस है, परफॉर्मेंस फीस है, एडमिन फीस है, कस्टोडियन फीस है, ये कई सारी फीस भी होते हैं। तो इनको एलोकेट कैसे करोगे? एज ए हेज फंड हाउस वो खुद फीस कुछ नहीं बेयर करेगा, क्योंकि वो किसी और की इन्वेस्टमेंट मैनेज करके दे रहा है। तो इवेंचुअली ऑल द फीस शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द अकाउंट्स ऑफ इन्वेस्टर्स। ये बट ये पैसा जो अभी आया हुआ ये तो पूल में आया हुआ है, तो फीस जो जितने भी ब्रोकर्स है, जितने भी कस्टोडियंस है, जहां जिसके साथ हम डील करते हैं, जितने भी अदर प्लेयर्स है, वो तो फीस पूल को ही चार्ज करेंगे, एक पूल पे फुल फीस चार्ज होगा, क्योंकि दैट वी हैव इन्वेस्टेड फंड्स फ्रॉम द पूल अकाउंट। तो ये जितने भी फीस और चार्जेस होते हैं रिसीव्ड होते हैं पूल पे होंगे, पूल से डिडक्ट होंगे। अगर ये पूल से डिडक्ट होते हैं, समझो एक पूल में 1,000 इन्वेस्टर्स है या फिर 500 इन्वेस्टर्स है, मे बी 200 इन्वेस्टर्स है, तो हमें वो फीस जितनी उतनी पोर्शन में, जितनी जिसकी इन्वेस्टमेंट है उसके पोर्शन में उसके अकाउंट से डेबिट करनी पड़ेगी इन्वेस्टर के, या फिर रिकॉर्ड करनी पड़ेगी एट द एंड ऑफ द ईयर वंस वी डू द एक्चुअल अकाउंटिंग फॉर दैट पर्टिकुलर अकाउंट। सो वी गोना डेबिट दैट फीस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर अकाउंट, बिकॉज ये फीस है किसी का इनकम भी तो है, उनके अकाउंट में जाएगा, करेक्ट? तो ये लॉजिक समझिए।
तब जाके you will be able to understand the accounting importance in investment business as well. ये हर बिजनेस में सेम लॉजिक काम करता है. किसी अगर कोई बोलता है कि आई एम फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, डोंट वरी. जैसे कि मैंने बोला अकाउंटिंग प्लेटफॉर्म चेंज होगा, लेकिन एंड कुछ लैंग्वेज है चेंज, बट द टर्म्स टर्मिनोलॉजीज वुड बी डिफरेंट, बट स्टिल यू कैन लर्न दैट and you can link your the current knowledge with the investment accounting knowledge. ठीक है. So ये की टर्म्स है जो बेनिफिट्स होता है. देन द सिस्टम परमिट्स अकाउंट्स टू kept as much as details necessary and therefore afford significant information for the purpose of control. Control is something very important because कंट्रोल मतलब कितने एक्सपेंडिचर्स करना है मुझे, कितना इनकम जनरेट करना है, तो टारगेट कितना है, जो टारगेट के अगेंस्ट जितनी हम चीजें करेंगे उसको हमें कंट्रोल्स, हम वी विल सेलेक्ट कंट्रोल्स. वी आर गोना कंट्रोल द एक्सपेंडिचर्स, कंट्रोल द इनकम, कंट्रोल द लायबिलिटीज फॉर दिस पर्टिकुलर क्वार्टर और ईयर, राइट. वी यूज टू stated such names or the statements in our discussion. तो इसका मतलब यही है कि ये अगर मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन, इफ आई हैव अ फ्रेमवर्क अबाउट ऑल द information, then definitely I can schedule or I can set up this control function for all the the extra expenditures that we are doing, or the liabilities that we are taking, and eventually we are creating burdens on our business. So we will definitely control it if we have a the legit information in our hand. Okay, so it will help us to control the all the activities as well. The result of one year may be compared with those of previous years, and reasons for the change may be ascertained. So this is also from the investing standpoint, this function is again very important, or this advantage is very important. Always we compare all the details with the previous year informations or the past information, and on the basis of that we take the investment decisions, or fund managers take the investment decisions, or the other the board of directors of the business, they take the investment decisions, right. सो ये अकाउंटिंग हर जगह पर अपना अच्छे से रोल निभाती है. हर जगह पर अकाउंट, विदाउट अकाउंटिंग देयर इज नो बिजनेस. जैसे कि आपको अगर कोई कंपनी आपकी सैलरी ऑफर करती है, वो भी उनको रिकॉर्ड करना होता है. पहले केस में तो जस्ट नोट बनेगी एक, द कंपनी ऑफर्ड दिस सैलरी टू दिस पर्टिकुलर एफटी, एंड इसलिए एक आपका अकाउंट होगा, एक कंपनी का कैश अकाउंट होगा. कंपनी के कैश अकाउंट से ये बैलेंस हर महीना डेबिट होता रहेगा, ये आपके ओन अकाउंट में क्रेडिट होगा. बट इसकी भी तो अकाउंटिंग होगी कंपनी का. इवेंचुअली इट्स एक्सपेंस फॉर द कंपनी एंड द सैलरी इज इनकम फॉर यू. जब आपके अकाउंट में भी वो सैलरी आएगी तो वहां से भी अकाउंट आपको मेंटेन करना पड़ेगा, दी हाउ मच एक्सपेंडिचर्स दैट you're doing from that particular salary, and at the end of the quarter or year that even you can also file your ITR. otherwise फिर आपको ज़्यादा टैक्स भरना पड़ेगा. मतलब ये अपने डेली रूटीन लाइफ में भी हम यही करते हैं, कुछ अलग नहीं करते. फंड लेवल पे थोड़े से ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन शुड बी वेरी हाई, एट इंडिविजुअल लेवल द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन शुड बी लो. तो इसलिए हमें लगता है कि वो कॉम्प्लेक्स होगा या फिर कुछ और होगा. यस, देयर इज अ लीगेसी व्यूज, लीगेसी दैट इज इन्वॉल्व इन द इन्वेस्टमेंट बिजनेस. जैसे कि सेल्स बिजनेस में क्या क्या, नॉर्मल बिजनेस में क्या क्या होता है, प्रोड्यूसर होगा, सप्लायर होगा, एजेंट होगा, रिटेल कस्टमर. यहीं से अकाउंटिंग टर्न होती है ना. जैसे कि पहली एंट्री मैन्युफैक्चरर अपने बुक्स में सप्लायर से जो चीज़ें लेता है वहां करेगा, मीन सप्लायर भी करेगा इवेंचुअली. सो वॉट एवर हेल प्रोसेड टू दी मैन्युफैक्चरर से अगर चीज़ें बनती है तो बनने के बाद he'll transfer that all the goods to the agent or maybe suppliers again. Then supplier will transfer that goods to the retailers, and retailer it means or the retail businessmen. So they will retail businessmen transfer that goods to the end users. तो ये हर एक अपने अपने अकाउंट्स में एंट्री करेंगे उसकी, क्योंकि पैसे तो हर एक की जेब से कटने ही वाले हैं. हाउ यू गोना ट्रेस टू इट देन. तो ये डेली रूटीन में भी हम अकाउंटिंग करते हैं. अगर ऐसा कोई है बंदा यहाँ बोलता है कि भाई नहीं हम तो अकाउंटिंग करते ही नहीं है, आई जस्ट वांटेड टू टेल देम वी डू द अकाउंटिंग फॉर ऑल, फॉर आवर ओन. बट हमें पता नहीं है कि अकाउंटिंग कहाँ होती है. बट इफ यू आर डूइंग ऑल द ट्रांजैक्शंस फ्रॉम योर बैंक अकाउंट, डेफिनेटली यू कैन सी द स्टेटमेंट देयर. स्टेटमेंट इट्स अकाउंट, योर ओन अकाउंट, एंड यू कैन ट्रेस ऑल द एक्सपेंडिचर्स फ्रॉम योर बैंक अकाउंट. पर अभी तो कई सारे जैसे कि क्वेंट बुक है, या फिर क्या बोलते हैं उसे, एक नया बुक भी आया मार्केट में,
वो भी यूज करते हैं लोग टू ट्रेस ऑल योर एक्सपेंडिचर्स, ठीक है। Then account, we have seen the accounting equations become true in all cases. A person starts his business with, says, 1 million, then the capital and cash are both 1 million. Okay, so now account, it means here the main focus is on the accounts, how many accounts are involved in that particular transaction. Let's say in terms of private equity, what we do in a private equity, we actually bring capitals from the investors. Investors will transfer their investment or fund to the P account, correct here. So it means we are bringing cash from the investors, but actually it's a capital that we are bringing from the investors and we are investing into the businesses. Same logic you can apply here. It means in that particular transactions, the two accounts should be involved. One is cash and another one is capital, right? ये सीखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि तुम्हें पता लगना होना चाहिए कि पर्टिकुलर क्योंकि स्टेटमेंट्स आता है इंटरव्यू में, अगर कोई स्टेटमेंट्स है प्रीपेड एक्सपेंस, लेट्स से समवन इज आस्किंग अबाउट व्हाट इज द एंट्री फॉर अ प्रीपेड एक्सपेंस. Prepaid expense, let's say hedge fund house, they paid fees to their uh, maybe they paid fees or rent, let's say prepaid rent, instead that paid to the vendor for a next accounting year as well, right? Prepaid rent itself, it's one account, correct? And so when we paid, it means we have processed what we have processed, which is cash, correct? Cash is the another account. There are two accounts which are involved in this particular activity, करेक्ट. सो जब भी हम ये स्टेटमेंट कहीं से सुनने आता है तो हमें पहले पता होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस में कितने अकाउंट्स इन्वॉल्व है. अगर ये पता नहीं है देन यू कैन नॉट प्रिपेयर फाइनेंस एंट्रीज और यू कैन नॉट रिकॉर्ड द एंट्रीज करेक्टली. अभी इसमें अगर आप इफ यू आर फ्रॉम अ नॉन अकाउंटिंग बैकग्राउंड, स्टिल यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, क्योंकि ये मैं आगे एक चार्ट में बताऊंगा कि कौन से अकाउंट्स कौन से अंडर आते हैं. बट ये जरूरी है कि हमें जैसे ही स्टेटमेंट्स आता है तो हमें पता होना चाहिए कि वो स्टेटमेंट्स क्या है. जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूं कि परचेस सिक्योरिटीज, परचेस स्टॉक, लेट्स से of rupees 1000. So in this particular statement, you can see the purchase is, which is one account, purchase of stock or purchase, that is one account, right? And another one is if you purchase something, it means you have paid something. That is 1000 consideration that you have paid to purchase stock of rupees 1000, correct? So it means eventually cash that will be debited from your account and the securities will be credited in your account. So in this particular transactions there are two accounts which are involved. तो ये हमें पता होना चाहिए तभी जाके that you can record that particular transaction, right? Ideally देखो कैश बुक सबके पास होता है. अगर आप कुछ डिमैट अकाउंट से परचेस करते हो, आप कुछ डिमैट अकाउंट में सेल करते हो, तो कैश भी कहीं ना कहीं दिखता है ना. जब भी कुछ आप परचेस करते हो, जो फंड सेक्शन में जो कैश होता है वो डेबिट होता है जब परचेस करते हो, तो यानी कि कैश बुक वहां पे भी होता है. कैश बुक से ओके सो ये मैं थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि और अच्छे से बताऊं. मैं ज़्यादा चीज़ें बैंकिंग की तरफ साइड से बोल रहा हूँ, ब्रोकर अकाउंट की साइड से बोल रहा हूँ, ताकि मेरा इंटेंशन ये है कि आपको बैंकिंग के पर्सपेक्टिव से समझे. नॉर्मल अकाउंटिंग तो आपको भी पता है क्योंकि हम कॉलेज और यहाँ पे वही चीज़ें सीखते, तो हमें पता है वो चीज़ें. जैसे कि आपके पास डिमैट अकाउंट होता है, यू हैव अ डिमैट अकाउंट, उसमें एक you can see the fund section, right? Once you add the fund, here you see the fund which is 1000, and here that again would be trade account as well, trading account as well. Now you're looking for a purchase of securities, and that is for, let's say, HDFC Bank.
which is worth of rupees 1000, and you want to purchase the, let's say, 10 securities, 100 each per equity. So once you do this, so the funds that they parked in a different account, and you have a demat account as well, right? Why the demat account? See, the trading account, the purpose of trading account, which is something, so you can just send the trading request or to purchase something or sell something request to the broker. But eventually, once you purchase this, the securities will be transferred to your demat account. So it means in your demat account, securities will be credited, and from the fund account. So the fund accounting, which is something different, right? Because this is a cash book actually. The cash will be debited. The 1000 will be debited. So here your net balance should be zero because you have purchased something. So this cash 1000 will be transferred to the someone. Someone, it means who is the seller, who have sold the security to you, so that the fund will be transferred to his account. We should understand this funda, right? So it means यहाँ से अकाउंट जब फंड डेबिट होता है तो यहाँ पे भी एंट्री होगी, ये तुम्हारा कैश बुक है, बट यहाँ पे जो जैसे दो अकाउंट मेंटेन होते हैं, जैसे कि सिक्योरिटी का एक ट्रांजैक्शन, सिंगल लाइन ट्रांजैक्शन दिखेगा, क्योंकि इवेंचुअली एक जो इफेक्ट है आपके कैश बुक में है, द फंड विल बी डेबिटेड by the name of that particular securities, HDFC stock into price, so the amount will be debited from your fund account, and even the securities whatever you have purchased will be credited in your demat account. Correct? Once you purchase, it means जब भी आप कभी सेल तो करोगे ही ना, द परचेस माइनस सेल्स प्राइस, जब ये करोगे फंडा तो आपका टोटल इनकम होगा, या फिर नेट इनकम, जो भी नेट इनकम या फिर टोटल इनकम जो आपको कैलकुलेट करना है, वो कैसे निकलेगा? जब परचेस तो आपने किया, यहाँ पे क्रेडिट सिक्योरिटीज आई थी, बट आप इसको बेचना भी चाहते हो, बेचना चाहते हो यानी कि सेल करना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू सेल, सेल की भी एंट्री होगी, परचेस की एंट्री, सेल की एंट्री, एंड इन दोनों से जितना भी जनरेट होगा उसे नेट इनकम कहते हैं। तो इसलिए देखो इंपॉर्टेंस कैसे लिंक होता है एक दूसरे के साथ। तो जब तक इंपॉर्टेंस पता नहीं होता है, चीज़ें काम नहीं करती है। एंड अगर तुम्हें चीज़ें सीखनी है तो पहले ब्रोकर पर्सपेक्टिव से सोचो। कई सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि ट्रेडिंग अकाउंट, ये हेज फंड के लिए भी सेम होगा, ये म्यूचुअल फंड के लिए भी सेम होगा, किसी और ट्रेडिंग एंटिटी उनके लिए भी सेम होगा, उनको इतने अकाउंट्स मेंटेन करने ही होते हैं। एंड जब भी हम रिकॉन भी करते हैं, बहुत बार इफ यू आर वर्किंग विद कस्टोडियन, सो वी डू द रिकॉन with the demat accounts with your, that is cash book. क्यों? क्योंकि कैश बुक से एक तो बैलेंस क्रेडिट होगा या फिर डेबिट होगा, क्योंकि हम ये एक्टिविटी जो है ना, बाय सेल जो एक्टिविटी है ना, ये फ्रीक्वेंटली करने वाले हैं। फ्रीक्वेंटली एक्टिविटी बाय सेल होगा हमारा, कुछ तो बाय करेंगे, कुछ सेल करेंगे, बाय करेंगे, सेल करेंगे, एंड इसी के थ्रू वी ट्राई टू जनरेट द रिटर्न। एंड जब रिटर्न जनरेट होता है तो उसी के थ्रू हम एक्सपेंडिचर्स या फिर फीस जितनी भी हमने पेड करी है, दैट वी ट्राई टू रिकॉर्ड अंडर दैट पर्टिकुलर हेड, एंड तब जाके विल हैव अ नेट इनकम। एंड अगर नेट इनकम आ भी गया जैसे ये, उसके ऊपर टैक्स भी होता है, राइट? तो ऐसी चीजें, मतलब तुम्हें यू कैन थिंक ऑफ इट, लिंक योर, सो वॉट एवर नॉलेज और द कॉन्सेप्ट दैट यू हैव, यू कैन ट्राई टू लिंक इट, राइट? तो उसके लिए भी तुम फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस्ड हो या फिर यू आर फ्रॉम अ अकाउंटिंग बैकग्राउंड और नॉट, दैट फाइन, एब्सोल्युटली फाइन, मतलब कुछ जरूरी है ही नहीं है, ठीक है? कि सिर्फ लिंक करो चीजें एक दूसरे के साथ, कैसे होता होगा। अगर अगर आपको अकाउंटिंग सीखनी है, इफ यू वांट टू लर्न द अकाउंटिंग, थिंक फ्रॉम लाइक इफ देयर इज नो अकाउंटिंग देन व्हाट वुड हैव हैपेंड विद द बिजनेसेस, ये सोचो, एंड डेफिनेटली इट विल, मतलब हर चीज में आपको अकाउंटिंग दिखने लगेगी, हर चीज को यू कैन इजीली रिलेट, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंस है। जैसे कि यहाँ पे ये जो पॉइंट्स है अकाउंटिंग का, अकाउंट का, सिंपली कि कोई अगर ट्रांजैक्शंस या फिर कोई स्टेटमेंट्स होता है, हमें कोई पूछता भी है, तो हमें पहले अकाउंट्स उसमें से सॉर्ट करना है कि कितने अकाउंट्स इन्वॉल्व है। जैसे सेल ट्रांजैक्शन में सेल का एक कैश का अकाउंट होगा, परचेस में परचेस का एक, अगेन कैश का एक होगा, अगर कोई
क्रेडिट पे आपने परचेस किया तो फिर वो क्रेडिट यानी कि क्रेडिटर ना नेम जो बंदा होगा उसका एक अकाउंट होगा और एक तुम्हारा परचेस होगा। अगर आपने फिर बॉन्ड परचेस किया है ऑन कैश, एक बॉन्ड का अकाउंट होगा, एक कैश का अकाउंट होगा। करेक्ट, ये ऐसे डिफरेंट अकाउंट्स है, तो वो हमें रेक्टिफाई करने हैं, तब जाके आप अकाउंट एंट्री जो है यू कैन पास दैट entry into that particular books of account, and if you don't know then you cannot pass the accounting entries. तो ये इंपॉर्टेंट है कि पहले रेक्टिफाई करना है कि कितने अकाउंट्स है, कैसे अकाउंट्स है, कौन से अकाउंट्स है, एंड उसको आगे एक चार्ट है मैं बताऊंगा कि कैसे सेग्रीगेट करना है देन। ठीक है, तो ये चीजें यहां पर आपको करनी है एंड पता होनी चाहिए। एंड ये चीजें ट्रस्ट मी गाइस, इंटरव्यू डायरेक्टर लेवल तक का भी इंटरव्यू हो, यही सारी चीजें, क्योंकि बेसिक चीजें हमें आती नहीं है, उनको पता है। अगर लॉजिक देखा जाए तो यू हैव वर्कड विद सेटलमेंट प्रोसेस सिंस लास्ट, यू आर वर्किंग विद सेटलमेंट प्रोसेस मे बी सिंस लास्ट 10 years or 5 years. You are pro into the settlement activity, but they are sure about that particular things because you are not from this accounting or the core accounting things. Even settlement is also part of accounting, but if you are not from the core accounting entries and also, definitely they will pitch or they will ask more and more questions on accounting parts. एंड ये बेसिक है कि आपको अकाउंट पहले पता होने चाहिए कि इफ यू वांट टू प्रिपेयर द अकाउंटिंग एंट्रीज, क्योंकि उसका लिंक मैं आगे आपको बताऊंगा कि अगर आप अकाउंट अगर सेग्रीगेट करने नहीं आ रहा है तो डेबिट यानी कि डेबिट जाना क्रेडिट आना जो होता, डेबिट आना क्रेडिट जाना जो होता है, ये फंडा ही नहीं समझेगा फिर। ठीक है, ओके। So this is also important, which is T shape. This the format we call like T shape, right? So increase the balances and decrease the balances. The two columns which we referred above are put usually in the form of account called T forms. This is illustrated by the taking imaginary figures, right? Opening balance, your debit. Closing balance, again your credit balance. If you this the debit side balances, if you received something, you definitely record to the debit side, and if goes something from your business, then we record to the credit sides of your business, right? This is the credit sides of that particular account, right? And that is how we do the tally as well, right? And whatever difference that will have, we'll transfer it to the next account. Okay, but yes, the important is this shape that you can call the T shape. We do see the such statements in the mutual fund or hedge fund accounting as well. Okay, जब मैं ये सेशंस ले रहा हूँ तो मुझे बार बार हेज फंड और म्यूचुअल फंड बोलने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये मैं पूरी चीजें इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से डिस्कस करने वाला हूँ, अकाउंटिंग जो लिंक्स होगी वहां। ठीक है, ओके। टी शेप में चलो लेट्स सी कि यहाँ पर देखते हैं क्या हुआ है क्या नहीं। जैसे कि अभी अभी यहाँ पर जो चीजें हमने ऊपर डिस्कस करी है, definitely will help us to understand with this particular point. Initial investment by owners in a PE business or maybe even in a hedge fund or mutual fund business, the managers also they do some investment in that particular scheme. That would be the capital for them, right? And even investor fund is also part of a capital. Okay, so let's discuss about it. Initial investment, it's investment, it means it's a capital, it's a beginning investment, it's a capital. Find out, एंड आई वुड से कि पहले देखो कि कितने अकाउंट्स यहाँ पर इन्वॉल्व है। अगर ओनर खुद का है तो ओनर खुद के अकाउंट में खुद का नाम नहीं लिख सकता। ठीक है, सो यहाँ पे जब वेन एवर यू प्रिपेयर और दी रिकॉर्ड सच एंट्री, तो हमें ये पता होना चाहिए कि दो अकाउंट्स जो इसमें है, देखो ड्यूअल एंट्री सिस्टम में दो अकाउंट के बगैर यू कैन नॉट पास द अकाउंटिंग एंट्री। सिंपल, द लॉजिक इज दिस इज नॉट अ सिंगल एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट। वो भी हम फॉलो करते हैं, वो भी हम फॉलो करते हैं। जब
जो बाय सेल का जो बिजनेस है ना, हम सिंगल एंट्री हम अपने बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं इवेंचुअली। या फिर जो मिडल ऑप्स और जो बैक ऑफिस के जो फंक्शंस होते हैं, एक एंट्री बैक ऑफिस में होती है तो दूसरी मिडल ऑफिस में होती है, हम दोनों का रिकॉर्ड करते हैं, एमओ और बैक ऑफिस। या फिर एक स्टेट स्ट्रीट के बुक्स में एंट्री होती है तो दूसरी जेपीएमसी के बुक्स में होती है। जेपीएमसी ने जो समझो बायर जेपीएमसी है तो उतनी ही एंट्री करेगा, बाय किससे किया है उसका नाम लिखेगा अपने बुक्स में, एंड सेलर किसने किया है तो सेलर समझो जेपीएम है तो जेपीएम का अपने बुक्स में सेलर के इस सेलर कैटेगरी में लिखेगा, सेल्स बुक में, ये बाय बुक में। ये सिंगल एंट्रीज ही अपनी मेंटेन करते हैं, बट इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द ईयर ये ऑटोमेटिकली ड्यूअल एंट्री में कन्वर्ट होकर उनको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देनी होती है। ठीक है, बट फॉर अ इजी अंडरस्टैंडिंग और रिकॉर्डिंग पर्पस तो ये, एंड जब भी रिकॉर्ड भी करना होता है तो आपने देखा होगा कि we directly send emails to that particular company or counterpart to get the confirmations on it to record such a transactions into their books of account। तो ये हम देखते हैं, करेक्ट। तो द लिंक इज, जब भी हम कुछ सिंगल एंट्रीज ही हम अगर हम कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अकाउंटिंग दैट वी आर डूइंग, बिकॉज हम वो डायरेक्टली अपने बुक्स में कर रहे हैं। तो हमें ये इतना मतलब हर बार दो इफेक्ट, जैसे कि हमने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है तो एक कैश में जाके इफेक्ट दे दो, एक कैपिटल में देखो, हमें हमें ये करने की जरूरत नहीं, यू कैन इजीली अवॉइड इट। ठीक है, तो इसके लिए भी अकाउंटिंग प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए अवेलेबल, बहुत सारे हैं, तो वहाँ तब भी आप यू कैन डू इट, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल टू मेंटेन द सिंगल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अगर आप खुद के अकाउंट में कर सकते हो, बट उसका कहीं ना कहीं लेग भी तो होना चाहिए किसी और के बुक्स में भी। ओके सो इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस में टू अकाउंट्स है, वन विच इज कैश एंड सेकंड विच इज कैपिटल, दिस वन। सो कैश विच इज that increased means that you have received, it means that the cash will be increased, right? So ये डेबिट बैलेंस है तो एंट्री भी वैसी ही होती है इसकी, एंड ये कैपिटल की जो क्रेडिट साइड है, एक्चुअली क्रेडिट जाके बैलेंस पार्क होता है तो उसका भी वो इंक्रीज ही होता है, कैपिटल तुम्हारा इवेंचुअली इंक्रीज हो रहा है, तो एंट्री भी वैसी होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यानी कि जैसे एंट्री अगर मैं एंट्री की फॉर्म में लिखूं तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, whatever amount is that you can mention, see the entry, राइट। ये इजी क्यों गया, ये लॉजिक पहले समझी, इजी इसलिए गया ताकि हमने यहाँ पूरे दो अकाउंट सॉर्ट आउट कर दिए, स्पॉट कर दिए पहले कि एक कैश है दूसरा कैपिटल है। अभी ये स्पॉट करने के बाद इंपॉर्टेंस क्या है, फिर एक्टिविटी देखो कि पैसा गया है कि आया है, रिसीव्ड और गॉन। रिसीव्ड है, if it is received then it's a debit balance, and if it is gone it means it's a credit balance। यानी किसी और मतलब जैसे इंपैक्ट हो रहा है, जैसे कि कैपिटल अकाउंट का इवेंचुअली बैलेंस उनका बढ़ ही रहा है ना, तो कैपिटल अकाउंट में आया है तो उसका क्रेडिट बैलेंस ही होगा, वहां पे क्रेडिट जाके बैठा हुआ है, करेक्ट। तो ये चीजें इंटरलिंक्ड है टू ईच अदर, सो वी शुड नो इट, देन ओनली we can prepare the journal entries for that particular transaction। ठीक है, अभी सेकंड एंट्री देखो, पेड कैश टू द क्रेडिटर्स। सो वी हैव पेड दिस कैश 40 million around to the creditors। This effect cash amount which will decrease, and creditors account which is liability will also decrease, because जब हम कुछ पे करते हैं तो हमारा कैश भी जाने वाला है, एंड ये बैलेंस जो है इवेंचुअली सी द लाइबिलिटी ऑल्सो डिक्रीज, लाइबिलिटी जो होगी वो भी वहां से डिक्रीज कम होने वाली है। ठीक है, सो कैश बैलेंस 40 है, सो वेयर इज द अनदर वन, एंड क्रेडिट इज, इसकी वेल्थ भी डिक्रीज है, बट अगर ये जाती है तो उसकी एंट्री क्या होगी फिर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन,
credit what goes out. Debit the receiver, credit the giver. Credit is account debit to cash, करेक्ट. इवेंचुअली कैश ये जो है हमारे बिजनेस से जा रहा है एंड उनकी क्रेडिट साइड का बैलेंस भी कम होने वाला है. अगर हमने यहाँ पे पहले क्या कर दिया कि दो अकाउंट पहले स्पॉट कर दिए, स्पॉट अगर अकाउंट करने नहीं आ रहा है तो डिफिकल्ट जाएगा अकाउंटिंग एंट्री प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है किसके साथ क्या हो रहा है ये समझ में ही नहीं आएगा. ठीक है. तो ये नहीं होना चाहिए. तो इजीली पहले स्पॉट करना है रूल. मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूंगा अभी इन सब के ऊपर. तो लेट्स गो अहेड. ठीक है. देन ओके, जब अकाउंटिंग हम प्रिपेयर करते हैं तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है. डेट, पर्टिकुलर, रेफरेंस, अमाउंट. दिस इज द डेबिट साइड एक्चुअली. दिस इज द डेबिट साइड and this is the credit side. So same will be at a credit side as well. Debit is equal to credit. Okay. Date, particular, reference and amount. This is for like good to know purpose. अगर बहुत दिन हो गए भूल गए हो तो याद रखो. That's it. Okay. So this, the basic information or equation, accounting equation is very important if you want to understand the, the entire accounting or the importance of balance it for that matter. राइट. अगर ये पता नहीं है देन इट्स बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, या फिर अगर ये आपको समझ में नहीं आता है तो भी डिफिकल्टी है. बट यस, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज डेबिट, व्हाट इज क्रेडिट एंड देन व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ दिस एंड दिस. एंड ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चंस, यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट, ये इक्वेशन पे स्पेशली. राइट. Okay, so I'll read it. So we have seen that in a T accounts, increase and decrease entries are made on the left and right side of the accounts for assets respectively and vice versa for liabilities. But formally, accountants use the terms debit to denote an entry on the left side of any account and credit side to denote an entry on the right side of an account. जैसे होता है ना कि अगर कुछ लेना है तो मैं अपने पहले हमारा जो राइट हैंड है वो सामने करते कि भाई मुझे दे दो. एंड जब देना है तो देने का मन नहीं होता है तो दाएं हाथ से हम द लेफ्ट हैंड होता है तो हम बोलते कि भाई ले लो यार, मन नहीं होता है. तो वैसे टर्म है तो याद रखने के लिए. राइट जो होता है जैसे सैलरी, भाई दे दो जल्दी. बट देने की जब एक्सपेंस करने की बात होती है तो 10 बार नेगोशिएट करके वी स्पेंड इट, तो वो लेफ्ट हैंड हुआ. ठीक है. टर्म याद रखो. So we know that by deducting the total of liabilities from the total assets, the amount of capital is ascertained as indicated by the accounting equation. Assets is equal to liabilities plus capital. This is your own contribution capital, it means. Contribution. Liabilities that because when we talk about business, definitely we'll do some transactions on credit, we'll opt some loans for the business, will ask or request our stakeholders or creditors to hold for some time, then only you can pay the charges of their services or goods whatever that you have purchased from them. Outstanding expenditures or expenses, right? And the asset, something that still you have or you hold that, and that the particular things or the goods have some value. It could be machineries, it could be your own car, iPhone, precious things, and the other trademark, your business value, blah blah things, right? But the equation important is assets is equal to liabilities plus capital, or else the assets minus liabilities would be your capital. Whatever remaining, let's say your total assets including current or fixed, both. Your assets are uh, worth of rupees 1000 crore and your liabilities are around 800 crore, then it means your capital would be 200 cr.
correct? So you can compare this assets with the liabilities, and even you can compare the your owner's equity against the liabilities. Okay, this is even very important from investing purpose as well, क्योंकि ये ratios वगैरह जो होते हैं ना, P ratios, the capital adequacy ratio, current ratio, then the insolvency ratio, right? The debt to equity ratio, all the ratios only you would be able to perform once you have a the data from the this balance it कि कितने क्या क्या चीजें दिखती है, एंड इस फॉर्मेट में हम रख के कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देन assets is equal to liabilities plus contributions. ओके, सो liabilities जो होगी, या फिर इसमें ये जो फॉर्मूला में दिया गया है, तो जैसे कि contributed capital plus beginning retained earning plus revenue minus expenses minus dividends. ये डिविडेंड्स कंपनी के साइड से तुम्हारे, मतलब इफ यू आर अ शेयर होल्डर एंड यू आर गेटिंग दैट, सो इट मींस इट्स अ इनकम फॉर यू, बट इफ यू आर कंपनी यू आर पेइंग दैट, इट मींस इट्स एक्सपेंडिचर फॉर यू. ओके, keep one thing in mind here. So contributed capital, the original capital introduced by the owner, this is important. So that is what, so we'll have one capital account as well. Then the beginning retained earning, previous earnings not distributed to the shareholders. So it is just you have your earnings in your hand. Then retained earning account would be there again. Then revenue generated from the ongoing activities of the business. Revenue account would be there. Then expense account, this is also important. Dividend account, क्योंकि ये सब अकाउंट्स हम इन्वेस्टमेंट बिजनेस में भी देखते हैं. कैसे? अगर कोई यहाँ इन्वेस्टमेंट हो रही है तो उसके कई सारे अकाउंट्स आपको दिखेंगे. ये पता नहीं होता है, अलग बात है. जैसे कि कैपिटल अकाउंट हुआ, क्योंकि यही से हम इन्वेस्टमेंट लेके भी आते हैं और यहाँ से ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं. फिर वह तुम्हारा जो अर्निंग आप करते हो, जितना भी गेन इनकम, अगर इनकम अर्न किया तो एक्सपेंडिचर भी होगा. अगर कुछ स्टाफ अगर आप आपके काम पे रखते तो उसका सैलरी वगैरह यानी कि ऑफिस एक्सपेंडिचर भी होगा. यू अर्न समथिंग, इट मीन्स विल हैव टू पे टैक्सेस एज वेल, सो टैक्स अकाउंट भी होगा, करेक्ट? तो ये सब ऐसे अकाउंट्स आपको देखने को मिलेंगे. तो कई बार ऐसे होता है ना कि कोई बंदा टैक्स कैपिटल एक्टिविटी पे काम कर रहा है, कोई बंदा इनकम पे काम कर रहा है, कोई बंदा एक्सपेंस पे काम कर रहा है, कोई बंदा ऑफिस एक्सपेंस पे काम कर रहा है, कोई बंदा टैक्स पे काम कर रहा है, राइट? ये डिफरेंट डिफरेंट लोग, बट द पर्पज इज सेम. जितनी भी चीज़ें हमें रिसीव्ड होती है, जितनी भी चीज़ें हमने एक्चुअली करी हुई है, सो वी आर ट्रेसिंग दोज, वी आर मेंटेनिंग दी क्लीन रिकॉर्ड फॉर ऑल ऑफ दोज ट्रांजैक्शंस, राइट? क्योंकि इस पे ऑडिट भी होता है, आगे जाके ऑडिट में भी कन्वर्ट, ऑडिट कोई अकाउंट नहीं है बट ऑडिट एक एक्टिविटी है. इट इज़ लाइक रिकॉन एक्टिविटी. रिकॉन एंड एक्नॉलेज करो उस चीज़ को कि यस, वॉट एवर थिंग्स दैट वी हैव रिकॉर्डेड इन द रिस्पेक्टिव अकाउंट्स, सो ऑल बीन रिकॉर्डेड करेक्टली. ठीक है, ये चीज़ें होती है. तो ऐसे चीज़ें, मतलब जितनी चीज़ें सीखो उतनी कम है, जितना पढ़ो उतना कम है. एंड मैं तो बोलता हूँ कि जितने भी बंदे, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर हेज फंड अकाउंटिंग, पी और म्यूचुअल फंड, ये जितने जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हो, हर दिन अकाउंटिंग पढ़ो, हर दिन बुक्स ले लो, जो करना है करो, मटेरियल ले लो, पढ़ो. मेरे वीडियोस देखो, देखना है तो मत देखो, लेकिन यू शुड रीड इट. रीड कर, एंड रीडिंग भी इनफ नहीं है, ऑनेस्टली रीडिंग भी इनफ नहीं है. तो ये आपको हर दिन कम से कम थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए. फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, रिकॉर्डिंग एंट्रीज पे, टैक्स पे, हर चीज पे थोड़ी बहुत प्रैक्टिस, एटलीस्ट फॉर 25 to 30 मिनट. जिनकी एज इंडस्ट्री में या फिर जिनका एक्सपीरियंस मोर देन 50 ईयर्स या फिर 10 ईयर्स का है, उनके लिए डरने की बात बिल्कुल नहीं है. बट जिन लोगों को जस्ट हु हैव रिसेंटली ज्वाइन टू दिस इंडस्ट्री, दे शुड टेक दिस इन अ वेरी सीरियस वे. क्योंकि इनके लिए अभी 5 साल ही बचे, 5 या 10 साल, उसके बाद दे विल टेक अ वॉलंटरी रिटायरमेंट फ्रॉम दिस कॉर्पोरेट.
वो पढ़े या नहीं पढ़े कुछ फर्क नहीं पड़ता, जिस पोजीशन पे बैठे हैं स्टिल इफ दे stick to that and if they survive then there is that's means for them that is fine. बट अगर आप अभी ज्वाइन कर रहे हो तो फंड अकाउंटिंग पीई के लिए काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज अपकमिंग टाइम में आएंगे, तो इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी उन्हीं साइट्स पे ज़्यादा होंगे, और जिनका अकाउंटिंग स्ट्रांग है ओनली ऑफर विल बी ऑफर टू दोज कैंडिडेट्स। सो ये किसी से मतलब ऐसे एक आधा वीडियो देख के इंटरव्यू देना, मैं तो बोलूँगा कि वो कोई ऐसे अच्छी बात है नहीं है। आई विल नॉट एनकरेज यू टू डू सच थिंग्स, क्योंकि वहां जाके काम करने के लिए कई सारे चैलेंजेस आते हैं। आफ्टर दैट विल पुश ऑन दैट द पीआईपी, परफॉर्मेंस इन प्रोग्रेस, एंड इट विल लीड टू द forceful resignation as well, and it will eventually affect on your career, because immediately that nobody can offer the job. It's a bit difficult to hunt the opportunities from the market because the competition is increasing, side by side. And even in the industry like गवर्नमेंट का भी अगर डेटा देखे तो गवर्नमेंट में भी जॉब ही है ही नहीं है ज़्यादा, तो इवेंचुअली जितने भी कॉलेज ग्रेड्स वगैरह फ्रेशर्स भी होते हैं जैसे ही निकलते हो दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर अ जॉब। सी फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, तो आने वाले 5 समय में जैसे अपॉर्चुनिटीज होंगे, फिर वो जितने मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेजुएट्स होके लोग आएंगे या फिर फ्रेशर्स आएंगे तो वो अपनी पोजीशंस ग्रैब कर लेंगे, तो अपॉर्चुनिटीज उतने प्रोपोर्शनेटली कम भी हो जाएंगे। तो सोचिए, एंड इसके जब कंपटीशन बढ़ेगा तो क्वालिटी पे असर होगा। जब कंपटीशन हाई होता है देन क्वालिटी पे असर होगा। क्वालिटी इन टर्म्स इट मीन्स नॉट बैड वे, इन अ गुड वे। जैसे कि कोई भी अगर इफ यू आर एक्सपेक्टिंग 15 lakhs फॉर पर annum and you are not aware about accounting terms, key accounting concepts, key accounting statements or accounts, then why someone will offer 15 lakh rupees for per annum? You think from this perspective. You're a businessman and you're looking for a candidate, and now the candidate is looking for 15 lakhs, and when you ask few questions to him about the accounting and then the candidate is not able to answer to those, then why will you offer 15 lakhs rupees per annum? Just because you have excess of money in your account, that is what you want to offer it? No, right? Because see, when the competition will increase, the quality of interviews also will increase, and the most of the people, they will ask most of the questions on a key subjects, right? Like accounting. Everywhere, see, the accounting is very key subject and crucial subject, so most of the people, they will ask questions from the basics. ये बेसिक्स कहने के लिए है, बट यही अकाउंटिंग है, तो यही, और कुछ बेसिक्स वगैरह नहीं है, यही सब चीज़ें हम वहाँ पे करते हैं, एंड वही चीज़ें इंटरव्यू में भी पूछी जाएगी, चाहे किसी भी पोजीशन के लिए इंटरव्यू हो, वेदर यू लुक फॉर अ डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, मैनेजर, वीपी, एवीपी, बेसिक अकाउंटिंग ही होती है वो, क्योंकि हमें पता नहीं है, क्योंकि हमने दैट वी हैव स्पेंड मोर देन 15 years टाइम विद द अदर प्रोसेस, we forgot that process and now we are not able to understand what is basic and what is advanced। तो ये चीजें हमारे साथ होती है, ठीक है। तो ये हमें चीजें, देखो मैंने सेशंस लेने के पीछे भी यही मोटिव था कि चलो कि यार एक मास्टर सेशन यानी कि तगड़ा लंबा सेशन ले लेते हैं, जिसपे पूरी चीजें अकाउंटिंग की हम डिस्कस करेंगे, अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स और जर्नल एंट्रीज डिस्कस करेंगे, जो कि यही बेस है जो हमें पता नहीं है। अगर ये बेस पता नहीं है, अभी कई सारे ज्ञानी मेरे पास आके बोलते कि सर रियल एक्सपीरियंस, अभी रियल एक्सपीरियंस के लिए अकाउंटिंग अकाउंटिंग है, वहां जाके सिर्फ एक एप्लीकेशन में ये सब चीजें करना है, बट तुम्हें तुम्हें सिर्फ ये जो अकाउंटिंग है वही पता नहीं है, तो जाके एप्लीकेशन पे क्या, वो तो I have seen many candidates, even they are not from commerce background, they are not from even MBA, right? They are from manufacturing, they are sorry, the mechanical engineering, other background, but still they are working into this investment banking domain. Why? Because उनको अभी देखो पता नहीं है कुछ, बट उनको एप्लीकेशन पे काम करने के बाद बता दिया गया है कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, still they are confused in the between debit and credit accounts, but that doesn't matter, now they are working well, even they are getting paid well, right? तो ये अलग पार्ट है, बट एक लेवल तक सीमित है। देर इज अ रिस्ट्रिक्शंस राइट ऑन दैट पर्टिकुलर नॉलेज पार्ट, क्योंकि उनको अभी अकाउंटिंग पता नहीं है, तो इंटरव्यू में वही सवाल आते हैं। कई सारे लोगों को मैंने देख चुका हूँ, अभी भी आते हैं मेरे पास कि सर आई एम नॉट फ्रॉम दिस बैकग्राउंड, मुझे इवन आई वांट टू अंडरस्टैंड द अकाउंटिंग। सो इसलिए जो भी चीज़ें हम
पूछते ना कि मुझे प्रैक्टिकल, ऐसे प्रैक्टिकल वगैरह कुछ नहीं, तुम्हारा जो अकाउंटिंग का नॉलेज है वही प्रैक्टिकल है, दैट्स इट। एंड इंटरव्यू में भी वही चीजें होती है ना कि बिकॉज दे आस्क क्वेश्चंस ऑन दिस टर्म्स, नोबडी आस्क क्वेश्चंस ऑन दी व्हाट इज जेनेमा। if they are asking, it means the interview is not prepared well, that what he gonna ask the questions about and what area. That sometime happened. Ignore those interviewers and those peoples who is asking questions on the applications and all. But yes, when you expect questions on those, suppose you are from settlement and you have worked on a same accounting platform and they're looking for a same candidate, so they can ask questions on that particular. That is fair. But if you have worked for settlement and someone is hiring for income processing and they have a different platforms, you have worked on different platforms, and they are asking questions on that particular aspect, then that doesn't make sense. What I believe, that is their personal right. बट ऑनेस्टली जितने भी एप्लीकेशंस है उसके लिए ट्रेनिंग होता है ना, ओजीटी जो होता है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, इस पे क्या करते हैं फिर, वही तो एप्लीकेशन ही तो करते हैं, शैडोइंग एंड ऑल। बट ये नॉलेज जो है ना बेटा, कोई नहीं देगा तुम्हें। ये सीखने के लिए समय लगता है, दैट यू हैव टू स्पेंड एवरी डे टू गेट द नॉलेज। एंड वंस जैसे कि नॉलेज पूरा ले लिया, अपने आप कॉन्फिडेंस दिखने लगेगा। क्वेश्चंस क्या होते हैं बैंकिंग के, बताओ मुझे क्या होते, क्या है होते हैं, तो फीस के रिलेटेड होंगे ज़्यादा, अकाउंटिंग एंट्रीज के रिलेटेड होते हैं, कस्टोडियन फीस के रिलेटेड होते हैं, क्लियरिंग के रिलेटेड होते हैं। बट इनमें कहीं ना कहीं अकाउंटिंग ही है। विदाउट अकाउंटिंग देर इज नो सिंगल ट्रांजैक्शंस दैट वी डू रिकॉर्ड। इट मीन्स कि अपनी अकाउंटिंग ही स्ट्रांग नहीं है, तो हाँ ये एक है कि चलो कि सिलेबस में ये सब चीज़ें नहीं होती है, तो बहुत बार विल हैव अ कंफ्यूजन। सो व्हाट विल बी डिफरेंट इन द इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग देन द नॉर्मल अकाउंटिंग। बट I just wanted to ensure you all, you guys, if you have accounting knowledge, if suppose you are from maybe the accountant or maybe chartered accountant, बीकॉम और बीए, जो भी जितनी भी फील्ड्स है, अगर आपका आपके अकाउंटिंग नॉलेज पे कॉन्फिडेंस है, यू देन यू डोंट नीड टू बॉदर अबाउट इट, राइट। तो जस्ट मुझे कॉल करो, एक अपॉइंटमेंट ले लो, कॉल करो, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। तो वो चीज़ें आप खुद उसके साथ लिंक करो एंड देन यू कैन सेट फॉर एन इंटरव्यू एंड देन परफॉर्म इट। ठीक है। बट ये सोचो, ये मत सोचो, विजुअलाइज मत करो कि अगर कोई पूछ रहा है तो ये कैसे दिखता होगा, कैसे होगा, क्या होगा, कुछ नहीं। इट्स सिंपल, इट्स अकाउंटिंग प्रोसीजर दैट वी आर डूइंग अकाउंटिंग। all we are investment bankers, we are doing accounting in the respective processes. If it is a recon, trade settlement, trade processing, income processing, interest, investing, trading, in every process we are doing accounting. Without accounting there is no process. ठीक है। ये जो इक्वेशंस यहाँ पर दिया हुआ है तो उसका एक एग्जांपल्स भी है, वहाँ पे देखा है। तो जैसे कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, इट्स अगेन total assets, it will record under the assets as well as owners capital because it's owners capital, but will record to that the asset side as well, because eventually जितनी भी चीजें हम परचेस वगैरह करते हैं एसेट से ही करते हैं। ठीक है। बट ये ऑल जितनी भी लाइबिलिटीज वगैरह होती है टोटल एसेट्स में रिकॉर्ड होंगी, देख लेना। बोरोड, बोरोड इट मीन्स इट्स अ लोन which is phi, liability. Withdraw cash from business, it's a withdrawal. uh, this term that we see in mutual fund or hedge fund, right? We do withdrawal our investment holdings, या फिर हो सकता है we do withdrawals from our the demat account, or that the trading account, maybe the broker's account. We withdraw the funds from that particular account, so it will debit eventually from that particular fund account and it will credit in your account, because that you want to utilize that funds for your own purpose or maybe for a business purpose, maybe in a different way, not from that particular account। ठीक है। विथड्रॉल, बट ये जो विथड्रॉल होती है तुम्हारे कैपिटल से माइनस होगी, तो इवेंचुअली ये है। देन लोन रिपेट टू द एक्सटेंट ऑफ दिस, सो आपने लोन भी पे किया हुआ है थोड़ा बहुत, इट्स अगेन लाइबिलिटी दैट यू हैव पेड। देन बॉट फर्नीचर वर्थ ऑफ रुपीज,
3 million. It's a furniture, cash, and cash. So you have a total something, the 12 million cash around that you have, then 1.2 million, sorry, then 4 lakhs you have liabilities and 8 lakhs that you have your owner's capital. कैसे होगा ये? When you minus this 4 million, sorry, 4 lakhs from the 1.2 million, then you will have a 8 lakh, right? So ये calculation है, देख लेना. ये notes, ये फिर ये PDF I'll share with you all. So go through it and read it if you want. ठीक है. So we have seen this already, so I don't want to go through again. Okay. Okay, this is something interesting part that we see here. Okay, principle and practice of accounting. Okay, suppose if I have sell furniture to the extent of 3 lakh, the reductions will be recorded by crediting the furniture account by 30. Right, so this, okay, the entire scenario will have to read it. When there is an increase in the amount of an assets, its accounts, it is debited. The account will be credited if there is a reduction in the amount of the assets concerned. Suppose a firm purchased furniture for 8 lakhs, the furniture account will be debited by 8 lakhs since the assets has increased by this amount. Your assets increased, but proportionately the cash will be reduced or decreased, right? Then suppose later the firm sell furniture to the extent of this 3 lakh, the reductions will be recorded by the crediting the furniture account by 3 lakh. जैसे कि मैंने बोला ना, परचेस करोगे कुछ सेल करोगे परचेस करोगे, डिफरेंस हम जैसे कैलकुलेट करते रहते दोनों का, वैसे इंक्रीज होता है तो डेबिट साइड, देन क्रेडिट अगर सेल करोगे तो परचेस, and then a balance that you will have, right? Read this, right? Okay, this is also again important. Okay, so these are the rules which are very important. Increase in assets are debits, decrease are credits. This is about assets. Then increase in liabilities are credits and the decrease are debits. Then increase in owner's capital are credit, decrease are debits. Increase in expenses are debit, decrease are credits. Increase in revenue or expenses are credits, decrease are debits. ये रट लो चाहिए तो, ये रटना पूरी, ये इतनी सारी ये जो चीज़ें है ना, ये कुछ रूल्स होते हैं ना, रटना है हमें. उसके लिए कोई अलग सा ट्रीटमेंट है नहीं है. अगर रटना भी नहीं है तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. आगे आगे जैसे मैं बताऊंगा तो वो चीज़ें थोड़ी बहुत और क्लियर हो जाएगी. जैसे कि अगर कोई इंक्रीज इन एसेट्स आर डेबिट और डिक्रीज आर क्रेडिट, इंक्रीज हो रहा है मतलब बढ़ रही है वो चीज़ें. जैसे कि फॉर्मूला है ना कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. कैश डिक्रीज हो रहा है, करेक्ट. कैश भी एक एसेट है ना, ठीक है. अगर मैं एक एक ही एग्जांपल लूंगा कि जैसे इसका इंक्रीज इन एसेट्स आर डेबिट, you purchase furniture, what happened in this case? Furniture, it means assets, we record as furniture, we record as a debit, right? Because assets increased, and the cash again, which is a real part of a real account, and we put it as a credit because it will decrease. Eventually we are paying, it means it will decrease, correct? So you can link this with these two terms. Okay.
The terms debit and credit about this should not be taken to mean respectively favorable and unfavorable things, so they merely describe the two sides of account. Okay. Okay. एक एग्जाम्पल है, ये मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ इसका, जैसे कि क्या इंक्रीज होता है क्या डिक्रीज होता है. एक एग्जाम्पल है, following are the transactions entered into by R after they started his business. Show his various accounts will be activated by these transactions. What is this AV? Anyways, the date which is April 2020, and these are the recordings. R started business with, it means it's a capital. He purchased furniture. See the two accounts and activities. Okay, this is very important. If you don't see these accounts, then it will be difficult. Then paid salary to his clerk, expenditures, right? Here purchase. Then paid rent, again expenditures. Received interest, income. Received interest on bond, let's say bond or deposit, maybe any other loan obligations. Okay, you see what has been increased and what has been decreased in this particular case. We need to understand this first. Okay, so cash invested in business, there are two accounts, bank and cash, and another one is capital account. Means assets and capital account, these are two accounts which are involved in this particular transaction. Increased debit balance, increased capital credit balance. All right, then purchased furniture for 12. So there are two accounts, one is furniture it means purchase account, another one is bank or cash that you can mention, that is fine, cash and bank. These are two are assets, right? One, the furniture purchase, it means furniture will come into your business, then it has been increased. And the cash, again, it's an asset, it has been decreased because you paid that. When you paid, it means it will be debit, and when it is increased it will be, sorry, when it is in decrease, then it's a part of credit, and when it is increased it's a part of debit balance. Okay, and if you perform the entry for a purchase, so what will be the entry? अगर ये देखो ये समझ में आया तो एंट्री परफॉर्म करने के लिए कुछ भी दिक्कत नहीं है. जैसे कि फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक और कैश बैंक एंड कैश अकाउंट क्रेडिट, ये तुम्हारी एंट्री हो जाएगी. तो यहाँ पे क्या है, इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब क्या है, वही है, राइट. तो चीजें जैसे कि इतनी सारी एक्सप्लेन करने के वेज है सर कि हमें ऐसे ऐसे एक्सप्लेन करे ताकि हम समझे उस चीज को. जैसे कि कोई ट्रांजैक्शंस मिलती है, कोई स्टेटमेंट आता है इंटरव्यू में, कोई इंटरव्यू ये क्वेश्चंस पूछता है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस, तो यू कैन रिक्वेस्ट देम टू दैट यू कैन इफ दे अलाउ यू टू राइट समथिंग ऑन पेपर. क्योंकि पहले देखो कि उसका स्टेटमेंट पहले रिकॉर्ड करो, देखो कि कितने अकाउंट्स है, फिर उसमें देखो कि इंक्रीज क्या हो रहा है, डिक्रीज क्या हो रहा है, क्या जा रहा है क्या आ रहा है, ये एक्सपेंस है या फिर एसेट्स है, या फिर लाइबिलिटीज है, या फिर लॉस है तुम्हारा, ये देखो एंड उसको फिर कैटेगराइज करो. सिंपल, उसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है फिर. चलो नेक्स्ट, पेड 1100 टू द एम्प्लॉय फॉर अ सैलरी. Salary and bank, these are two accounts. So salary, it's expense, and assets, again the cash that we have paid to the employees, so it means the cash is a portion, it's your asset. Correct? So cash decrease, credit,
जैसे कि है ना फॉर्मूला, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, करेक्ट। तो कैश जा रहा है बिजनेस से, इसलिए डेबिट क्रेडिट वहां पे मेंशन है, करेक्ट। एंड देन सैलरी expense increase, it's a debit balance. Paid rent, rent and bank expense increase, asset decrease, C. The received interest on investment, cash and interest account, asset increase, income increase, it's again credit, है ना कि डेबिट दी एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम एंड गेन्स, हुआ ना, मतलब रूल में बिठाया ना। तो वैसे रूल दैट यू कैन लिंक, यहाँ पे हर एक जगह पर आपका रूल काम करता है। रूल इसलिए है ताकि हम हर एक ट्रांजैक्शन को रूल में बिठा के हम ये फंक्शन परफॉर्म करें, ठीक है। होप दिस इक्वेशन एंड दी अकाउंटिंग के जितने भी हम टर्म्स यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको समझा पा रहा हूँ। सो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट, अगर लगता है कि नहीं, सो फिर यू कैन पर्सनली रीच आउट टू मी इफ यू वांट टू लर्न दी अकाउंटिंग इन डिटेल्स अगेन, but I'm trying my level best to explain it everything in English and in Hindi as well. I know there are most of the viewers are from south, north, and the other state. Could be difficult for them to understand in Hindi. That is what I am even discussing most of the terms in English as well. Because even I don't like to explain that everything in Hindi. My Hindi is not perfect. Let's see. Accounting equation approach, traditional approach. Hmm. This is the the structure of a balance sheet that we see in our business: equities, long-term liabilities, then current assets. Then out of this we do debit all the receivables, then fixed assets, furnitures, current assets, inventory, and cash. So eventually it should be tally, it should be match. If it is not, then definitely, so we have forgot something to record that particular transactions, maybe in the balance sheet, maybe in that particular account. Okay, but see how it's work. These are the terms in a formula. Cash is equal to capital plus loan minus furniture payment to trade payables, 500 500 this. So this is the cash that we will have. Let's just use E0, L0 and A0 to mean equity, liabilities and assets respectively at. So this equation would be helpful to understand this. Equity, liability and asset. Equity, liability and assets. Vice versa. You have this data. So how are you going to calculate? Let's calculate it. Assets and liabilities. See. Asset, liabilities and your owner's equity. These are the two accounting equations that if you want we can solve it just like, so we have a formula E0, L0 and EA, means ELE, equity, liabilities and then assets. Let's use this equity 51, the loans, just a minute. Let's use this
Loan means loans and trade payables 1517. So total liabilities that you have, which is total equity 51, liabilities that you have around 1720, and then fixed assets, inventories, trade receivables, and plus cash at bank that you have, which is around 6820. Right. So when you do this with this formula, equity plus your liabilities is equal to this 68. This is how the accounting equation or this equation works. Okay. Okay, so till now I would say we should stop here. Okay, and I'll continue this in the next session, and I'll cover the portion which is the accounting entries. Okay, these are the just practice problems. If you want, I can share this link, and definitely in the description I'll share this so you can check there. Okay. So in the next session that I want to cover the further part with accounting entries. In the next session, we'll start from this. I'll save this document. I'll start from this and cover journal entries. Then the even I want to cover main ledger sub means ledger part as well. Okay, trial balance, profit and loss account, then balance it and all. Okay, जितना भी हमने अभी तक till now whatever we have discussed, it was the background of accounting. But you can expect questions on those areas which we have covered in this session. So ye document, definitely I'll forward it or save it there, and I'll share that link to you so you can access this and read it. ठीक है. मैं आपको ज्ञान यहाँ पे अकाउंटिंग का देने के लिए भी नहीं बैठा हूँ, बट मेरा जो मोटो यही है कि यही सारी चीज़ें हैं, बैंकिंग में भी वही होती है, बस पता नहीं है, इसलिए हम इन चीज़ों से वी आर लिटिल बिट अवे फ्रॉम दिस. बाकी कुछ नहीं है. ठीक है. तो जब नेक्स्ट सेशन में अकाउंटिंग एंट्रीज कवर हो जाएंगे, देन विल कवर दिस ट्रायल बैलेंस लेजर एज वेल. सो ये सारी चीज़ें सीखने के बाद ये आप यही नॉलेज जो मैंने प्रीवियसली सेशन जितने भी वॉट एवर सेशन दैट आई हैव अपलोडेड वो उसके साथ लिंक करो. ट्रस्ट मी, ये चीज़ अकाउंटिंग आपका परफेक्ट है तो कोई माइका लाल आपको मतलब किसी भी इंटरव्यू में कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता आपको. बाकी चीज़ें क्या रटनी है, डेफिनेशन हुआ, ये हुआ, टाइप्स हुआ, एंड प्रोसेस नॉलेज तो होता ही है जहाँ पे आप काम करते हो. ज़रूरत ही क्या है फिर, कौन रिजेक्ट करेगा आपको, कोई नहीं करेगा, क्योंकि नॉलेज है अकाउंटिंग एंट्रीज की और क्रूशियल एलिमेंट ऑफ एंटायर बिजनेस लाइफ साइकिल और एंटायर बिजनेस इकोसिस्टम. तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए. ठीक है. सो टिल नाउ आई वुड से बाय. Okay, so I'll stop so here, and then we'll see in this next session.